हाँ. The big package. सबको मैसेज कम्युनिकेट हो गया था ना कल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एबल टू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir.
ट्रेड आइडेंटिफायर्स फॉर ओटीसी डेरिवेटिव्स, वहां से हमको स्टार्ट करना है ना। लास्ट टाइम हाँ आईएसडी, हाँ वही लास्ट टाइम वो देखा था ना, दिस केस डिफरेंट केस सिनेरियोस। अगर क्लाइंट्स ने इम्पैक्ट अपडेट नहीं किया सिस्टम में, तो इट विल बी रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड रेपुटेशन। कहाँ है बाकी सब? बाकी सब कोई आ रहा है क्या अभी अपने क्लास में ऑफलाइन? भाई हाँ, एक का हनान का तो आ गया मैसेज मुझे, हाँ उसका तो मैसेज था। और एनीवन एल्स? Mamta is there. Samiksha is also not there. She is coming. चलो we will start because आज 11 बजे आपका खत्म करना है थोड़ा, ठीक है? Okay. So now we are left with almost 2.5 chapters only. ये ISDA आज identifiers खत्म हो जाएगा, उसके बाद we are left with collateral management and trade reconciliation बस, that's it. So probably आपका आपका फिफ्थ को सॉफ्ट स्किल्स है ना वापस? कल कोलेटरल या रिकंसिलिएशन, और सिक्स्थ को मॉक्स कब है टेंटेटिवली? 10th ना, ठीक है। 12, 13 and then final mocks we have scheduled tentatively by 20th, या कुछ प्लान किया था कि नहीं किया है उसका? 20th right? So 11, 12, 13 okay, we can finish it. Risk management and regulations, ठीक है। 10th को मॉक्स रहेंगे, 14, 15, 17, 18, 19 एनीथिंग, एक रिवीजन या रिफ्रेशर रहेगा, दैट्स इट। सॉफ्ट स्किल्स के कितने अभी तो 3-4 हो गए ना सेशंस, कितने हो गए आपके? 4, वन मोर विल बी देयर, 5 हो जाएंगे नेक्स्ट वीक। ये तो पूरा ब्लॉक है, हाँ 17, 18, 19 आई थिंक 18th विल बी वन मोर। 17th को लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर रिविजंस ऑन 17th, 18th को सॉफ्ट स्किल्स, यस 19th को छुट्टी एंड 20th को मॉक्स, ठीक है। दिस विल बी अवर टेंटेटिव प्लानिंग, और फिर लास्ट वीक तो चलो कुछ नहीं है, वी विल सी, ठीक है। ओके, वापस बैक टू थियरीज। नाउ यहाँ मेन पर्पस ओके, so trade identifier for OTC derivatives. Now for example, over the counter derivatives, if you are carrying out, earlier we used to check for only stocks and money market instruments, but now say for example if you are checking with the OTC derivatives, what could be the different trade identifiers used over there? What is the purpose of that? First of all, of course, it needs transparency. स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट, अभी हो रही है? Yes sir, now it's visible. Okay, so basically it will first of all provide transparency of, that is one of the critical elements while carrying out OTC transactions. Second, it will facilitate identification and mitigation of systematic risk. What could be the systematic risk? Lack of updation of the real time data, ठीक है। अगर डिले भी हुआ डेटा का, तो either transaction will not executed or it will execute at higher price, chances are there, ठीक है। Second thing, third, it will also fulfill the G20 transparency commitment. So G20 is of course you know the group of 20 nations, G7, G20 कुछ सुना है, ठीक है। हाँ, so that is related to like if for example this particular nations are carrying out trades
within that particular geographical boundaries, it will fulfill certain economic criteria of these nations. Okay, as per the, of course, agreed upon norms. The data requirements, it will create consistency across the post-trading reporting regimes to both EMIR and MI. These are again the trade identification derivatives or the particular numbers that we have seen, 9-digit number or 11-digit or 13-digit. Different regulatory systems will be used to ensure that there are appropriate mechanisms at place in an order to ensure that transactions are carried out in a fruitful manner. The same thing is, again, I think it is being repeated over here, but the only thing is that this time we are trading into derivatives. It could be forwards, futures, or options, and even swaps. Okay. By increasing transparency in the derivative industry, the firms to specify the details of the derivative transactions, define trade repository data to be made available to all the relevant authorities, and creating a set of information to be provided to ESMA for the authorization as well as supervision. So just write what is the importance of transparency in OTC derivatives, in trading with OTC derivatives. What is the importance of transparency in trading with OTC derivatives? Question लिखने के बाद don't write that 3 points. Write first point. To create a set of information, for regulatory bodies, to create a set of regulation for regulatory bodies. Second, provide timely access to comprehensive data. Provide timely access to comprehensive data. Third, enable sophisticated central analytics for regulatory purpose. Which one? Enable, Bala? Enable sophisticated central analytics for regulatory purpose. Fourth, provide direct access to both domestic and global data. So this is the purpose of having identifiers for OTC derivatives with an objective to ensure transparency. Okay. Now, what will the benefits of this to market participants? Of course, there will be single point of connectivity, reconciliation and control. अगर अलग-अलग जगह पे बहुत सारा mechanisms है. First, there will be redundancy of data. What is redundancy of data? What is redundancy of data? Data duplication. एक ही डेटा है लेकिन बार बार अलग अलग जगह से आ रहा है. सेम डेटा इज बीइंग सर्कुलेटेड. से फॉर एग्जांपल एनएसई से भी रिलायंस का स्टॉक प्राइस पता चल रहा है, कोई दूसरा एक्सचेंज है वहां से भी हमको सेम प्राइस मिल रहा है. नाउ टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग, देयर हैज टू बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी व्हिच विल एंश्योर ऑफ प्रॉपर रिकंसिलिएशन एज वेल एज हैविंग बेटर कंट्रोल. एक ही जगह पे रहेगा डेटा और वहां से ही सबको मिल रहा है तो इट्स बेटर ना, अलग अलग जगह से आ रहा है. ठीक है. Second thing, leverage the services to achieve better operational efficiencies. Why? Because if, for example, in one transaction you are taking, for example, 15 minutes, ठीक है, अगर अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है तो आप एक जगह पे पहले इकट्ठा करोगे, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिमूव करोगे, फिर रिकंसिलिएशन करोगे, तो पूरा प्रोसेसिंग टाइम आपका 30 या 35 मिनट का हो जाएगा. इन दैट केस, टू अचीव बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आपको कम टाइम में आपको ऐसा डेटा अचीव करना होता है. For this purpose, you might have heard that particular, क्या बोलते हैं वो, which one is that quality management में आता है ये, Six Sigma, green belt, red, कोई तो रहता है black belt वगैरह वगैरह. Now this particular objective for that thing is to reduce the overall time, processing time जो रहता है ना,
Now remove certain, what is that Six Sigma? You are removing certain processes. पहले 10 process थी, for example, and you used to take around 4 to 5 hours of processing time, ठीक है? Now उस 10 process में ऐसा पता चला कि ये 3-4 process को अगर हटा दे तो entire process is not getting impacted. लेकिन हमारा time बच रहा है, 5 घंटे की जगह अब 2 घंटे हो रहा है. But that you need to identify which process I need to remove so that my processing time gets reduced and I can achieve better operational efficiency. Okay, this is the purpose of Six Sigma. Okay, now this is one of the even purpose over here, that you are leveraging all the services to achieve better operational efficiencies. Over time will further enhance automation. मतलब of course you will be have better automation at place in the OTC markets. Reporting perspective से क्या होगा? Significantly increase public confidence in the market. Centralized data will enable accurate calculation of the data set, and data fragmentation will lead to systematic overstatement. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अगर एक ही सिस्टम है तो एक ही रेगुलेटर होगा, एक ही नॉर्म्स, एवरीवन हैज टू फॉलो. फर्स्ट. सेकंड, सेंट्रलाइजिंग ऑफ द डेटा विल एंश्योर ऑफ बेटर एक्यूरेसी ऑफ द डेटा and will also assist to all the investors in the case of any fraudulent transactions or any other checks. At least they will be able to, अगर आपको पता है तो in that case a red flag system is there. What is red flag system? Any transaction अगर गलत हो रहा है या कोई inaccurate data आ रहा है, a red flag will be raised across that particular transaction. You need to cross check and go back to all the data, all the information from where you have got. ठीक है, वहां से हर एक इंफॉर्मेशन सोर्सेज को चेक करना है, कहां से डेटा गलत आया वो चेक करना है, रिमूव इट, रिप्लेस इट विद द करेक्ट डेटा एंड देन रेज द ग्रीन फ्लैग. दिस इज द प्रोसेस हाउ इट इज फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. ओके, see these are all things more from like what steps or what actions you are trying to implement with an objective to increase operational efficiency as well as overcoming fraudulent transactions. Second, maintaining या managing or even following of the regulatory mechanisms at place. Why? Because every organization will have certain norms to follow. कई जगह पे ऐसा होगा कि यूके से डेटा आ रहा है तो you have to get that data from one particular resource. It has to come with that particular reference number. It needs to have all the required data. तब जाके वो होता है. कभी कभी क्या होगा, see China has done multiple times. They will be sometimes asking कि उनके डोमेस्टिक करेंसी में ट्रांजेक्शन उनको चाहिए. ठीक है. Now, as an investment banker, you are not allowed to do that. आपको जो दूसरी करेंसी में ट्रेड करना है, से फॉर एग्जांपल पहले यूएस डॉलर में करो, फिर यूएस डॉलर में से कन्वर्ट करके उसको चाइनीज की जो भी करेंसी है, यू कैन नीड टू ट्रांसफर इट. बट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस या सर्टेन चैलेंजिंग सिचुएशंस, चाइना ऑलवेज इंसिस्ट टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. जैसे अभी रशिया ने कैसे किया कि उनको वो ऑयल वगैरह किसी को खरीदना है तो दे नीड टू पे इन देयर करेंसी. ठीक है. तो दैट मेक्स अ कंपल्शन फॉर एवरीवन. Now it's actually difficult sometimes to manage all the data. Central level पे तो US dollars में सबको transaction हो रहा है. For all of a sudden you are carrying out your trading into local currency, it will affect every other transaction systems. So that is actually not allowed. But you need to be very much firm in that case. और ऐसे cases investment banking में होते हैं. ठीक है. So you need to ensure कि आपके senior level फिर कैसे react करते हैं उसमें. Of course you need to inform them. आप जब inform करोगे तब जाके वो actions लेंगे. So you have to be careful over there. Reporting of all the exchange traded derivatives. ESMA requires listed products to be reported to trade repositories. It is reviewing the inputs from different stakeholders. Reporting of OTC derivatives. A minimum set of information will be required. DTCC's GTR will support the reporting. Specifications of format. Yes, now format of reporting has to be followed. You cannot follow any random format. Format मतलब जैसे for example एक ticket size में हमने देखा था, name of that particular counterparty, uska custodian name, who is the reference number, yeah, what is the date of the reference number, what is the currency being traded, how much amount is traded, whether the approval has been taken at both the ends or not. Each and every details will be structured in a format manner. You don't need to change that particular format and customize it अपने हिसाब से. नहीं मैं इतना ही डेटा मेंशन करूंगा, इतना इंफॉर्मेशन भेजूंगा. नो, जो फॉर्मेट दिया गया, अगर मिसिंग इंफॉर्मेशन है, you have to connect with your counterparty, obtain the information first and then only send or update your system. ठीक है. Entities, products and contracts should be accurately represented when reporting to data repositories. Universal codes has to be used and added while carrying out all the trades. In the event that trades submitted to different repositories, these codes will facilitate reconciliation. ठीक है. Okay. Now come to unique product identifiers. It is adoption of the ISDA UPI taxonomy. In the event that a globally agreed product identifier is not available, a number of other alternatives are available. Say, for example,
the other alternative or the other identifiers that we have used previously, ठीक है, अगर वो available आपको नहीं है, in that case you can use any of this different identification number. Just write these names of these alternative ones, these three: International Security Identification Number, ISIN, Alternative Instruments Identifier, and Classification of Financial Instruments Code. Okay, this will be only used when you do not have any particular proper product identifier in your case. ठीक है. लेवल 2 के नोट्स किसने अच्छी तरीके से बनाए? पूरा थियरी है. See, here you need to apply your mind from the perspective of how you can administer or manage your duties with respect to the given job roles. ठीक है. लेवल 2 वो उस टाइप की हर एक चीज है. Yes, as of now you might think कि ये मतलब बहुत overlapping theories है, one, and second of course redundant theories भी है, या तो फिर same approaches have been taken in all the transactions, but unless and until you start trading into the real systems, तब जाके ये each and every element will be coming into use. Unless and until, of course, I can understand practically we don't have such systems in our live markets. Otherwise, so we would have been able to see them. Okay. Written, everyone? Okay. Now, what is legal entity identifier? An interim legal entity identifier meeting the conditions indicate that certain regulatory oversight committees will be used for reporting purposes under EMIR, DTCC, and SWIFT, so that a global solution to the अभी एक चीज ये भी होगा, when we have already discussed this thing. Say for example, when you are dealing with a client who is transacting between two different countries, so not only the currency will be different, second you also need to be aware about the different tax norms. फ्रांस का कुछ अलग होगा, इटली का कुछ अलग होगा, यूके का कुछ अलग होगा. You need to follow the tax codes, tax regime from them. Why? Because किसी में कोई 10% टैक्स होगा, किसी में 20% होगा. तो you need to inform your clients कि आपके इस ट्रांजेक्शन या इस पर्टिकुलर प्रॉफिट में से आपका इतना डेबिट होगा. Now one more thing, tax is being debited in India or tax is debited in UK. That also needs to be specified. Otherwise वो डबल टैक्सेशन मेथड वाला कंसेप्ट आ जाएगा वहां पे. ठीक है. So everything needs to be entered into the system from this particular entity identifier. That is one particular aspect that needs to be checked. Valuations will not be of course important, but ठीक है, डेटा इंश्योर के लिए कर सकते हो. इसमें वैल्यूएशंस रिक्वायर्ड, वैल्यूएशन नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. One more important thing is this particular schema will require other collateral information to complement the information on exposure. Counterparties can report the collateral exchange for an individual contract to trade repositories and may report collateral exchange on a portfolio basis. Now, what is collateral? We have already discussed, but in terms of if I say, while from the trading perspective, what is collateral? Huh? No. हाँ, but trading में क्या कर सकते हैं, मतलब? Okay, if I give securities, then see what generally happens is in the case of collaterals. First thing, say for example, I am having a portfolio of 1 million. Okay. Now 1 million, that particular amount of shares or whatever the number of different shares, not only just one stock, but of course of entire the portfolio, I can at least receive 30 to 40% leverage on that from the broker in the case I want to carry out my extra transactions. मतलब 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है मेरे पास. अब 10 लाख के सामने 30 to 40% will be how much? 3 to 4 lakhs. अब 3 से 4 लाख का माल अगर मुझे मंडे को बाय करना है, now the only condition is that कि फ्राइडे को कैसे भी करके मुझे उसको सेल करना पड़ेगा. The only rule in that thing is that. ठीक है. Why? Because I cannot carry the overnight positions for a longer term. मतलब डिलीवरी ले सकता हूं लेकिन एक हफ्ते के लिए. One thing. Second, why for not longer term? In the case अगर 30-40% वॉश आउट हो गया तो मेरा जो बाकी का पोर्टफोलियो जो बचा है 6 to 7 लाख या जो भी है, now that also needs to be pledged. ठीक है. Why? Because I am running into huge loss. Now to avoid such huge losses,
ब्रोकर डायरेक्टली बोलेगा कि आपको फ्राइडे प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, यू नीड टू बुक योर ट्रांजेक्शन. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल. द एडिशनल और द सिक्योरिटीज ऑफ कोर्स दैट यू आर blocking it for the purpose of having another capital to carry out your trades. In other terms, banking terms में collateral कुछ अलग होगा, वहां पे asset आ जाएगा. For example, if I am taking a housing loan, my collateral will be my property only. ठीक है, या फिर other instruments which I am surrendering to the market. In that case, it can even be fixed deposits, it can even be gold ornaments, it can even be other assets which can turn into easy liquid. ठीक है, नॉन लिक्विड एसेट्स को आप कोलेटरल में नहीं रख सकते, मतलब शॉर्ट टर्म वाले. Property is a different thing. Why? Because it is a mortgage against your loan. So here collateral information, if the client is using any of the collaterals, they need to specify all that particular information so that whenever you are exchanging any of that particular transaction or portfolio details with any other counterparty, they will come to know that collaterals are being used with particular details. Okay. One of your major roles will be to capture both daily valuation and its associate collateral information. मतलब for example, if I have surrendered any collateral, मेरा security 1 million portfolio का था, every day I need to track that thing. कभी 9 लाख भी हो सकता है, कभी 12 लाख भी हो जाएगा. वो तो मतलब ऐसा ही है ना, I am not able or I am not even allowed to sell that portfolio unless I am closing my that 3 to 4 lakh वाला transaction. तब जाके वो collateral मेरा surrender हो जाएगा and my entire portfolio will be released. ये समझ में आया कि नहीं आया, या एनी डाउट्स? 10 लाख का पोर्टफोलियो था, ठीक है, उसके सामने मैंने वो कोलेटरल में डिपॉजिट कर दिया. अगेंस्ट दैट आई गॉट 3 lakhs ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल टू कैरी आउट माय ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक मार्केट. वन थिंग. सेकंड, अगर मैंने अपना पोजीशन वो 3 लाख वाला का क्लोज नहीं किया है, आई एम नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन दैट 1 million पोर्टफोलियो. सेकंड. थर्ड, जैसे ही वो 3 लाख वाला ट्रांजेक्शन कहीं से क्लोज करता हो, बाय किया है तो सेल करा होगा, सेल किया है तो बाय करा होगा, जो भी है, उसके बाद ही आई विल बी अलाउड टू हैव एन एक्सेस टू माय 1 million पोर्टफोलियो. नाउ बिटवीन ऑल दिस प्रोसेस, chances or probability is very high that 1 million can either turn into 9 lakhs or it can turn into 12 lakhs. या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा. But unless and until I am not converting my collateral transaction, that particular portfolio cannot be modified or edited. ठीक है. So this is one of the prospects or objectives that you need to capture your daily valuation of the portfolio. Okay, this is why it is important to have carry out daily valuation, and you need to ensure that you report to your party or counterparties about the changes that are happening in your portfolio. Now schema for trade identifier, another one. All the trades should have a UTI which is generated, communicated, and should be matched. If a trader requires a unique swap identifier, this should be used as a UTI. Why? Because for centrally executed trades, reference is generated. Now, what is the process? Now, this is the order of preference that all the identifiers will be used. Which one? First, centrally executed trades, then upfront affirmed ones, third, electronic confirmation matched ones, and last one will be the paper trades. These are the 4 different types of trades which will be executed in the order of this preference. So first, write only the names in their order. ठीक है, ये जो 4 नाम है ना, centrally executed trade, upfront affirmed, electronic confirmation matched, and paper trades. These are 4 important trades which will be executed from top to bottom order. Now, question can come, what is difference between centrally executed trade and electronic confirmed और इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन मैच ट्रेड? ठीक है, तो वो पता होना चाहिए. Now, what is centrally executed trade? The reference number will be generated and communicated at the point of execution.
Okay, not in between, only at the time of execution the reference number will be exchanged. Upfront account matlab reference number is generated and communicated at the point of submission. So before you are actually carrying out the execution, a report or a mail will be sent by the client wherein he will be mentioning his reference identifier, that is upfront. Directly जब मैं बोल रहा हूँ कि इस स्टेट को एग्जीक्यूट करना है तो वहां पे ही ऑलरेडी रेफरेंस नंबर विल बी प्रेजेंट. Third is electronic confirmation matched. So reference number is generated at submission and communicated at the point of confirmation. Submission के time पे, whenever I'm sending you the mail of the transaction, reference number will be provided, but it will be communicated at the point of confirmation. मतलब unless and until that trade is not communicated, trade is not executed, that particular transaction will not get confirmed. Last one is paper trade. So paper trade is of course reference number generated by the individual firms that will be sharing paper trades and update the reporting to reference the UTI trade. This is more of for the OTC counter trades. वहां पे ही तो एक्सचेंज होगा पेपर वाला ट्रेड, अदरवाइज इन द सिस्टम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. Now electronic and manual communication methods. Electronic communication of these reference numbers using the affirmation or matching platforms. Instances where the electronic trade affirmation process will include your email, your Excel file or CSV file. Parties should agree the UTI electronically as part of this trade affirmation process. Okay? And manual communication of UTI through trade recap by email or voice or through intraday reconciliation will happen. So this is more of like whether either you are carrying out your transactions through electronic modes or you are carrying out at a manual mode. Another scheme for trade identifiers. UTI generating party, that is not important. Okay, construction of UTI. Industry groups strive to find a unified solution for the prefix portion of the UTI for non-CFTC registered reporting counterparties. To ensure uniqueness across all the reporting transactions, a UTI will comprise of two parts. Which one? A UTI prefix, which is unique to the party, and a transaction identifier. Just write what is or what comprises of a UTI. What comprises of a UTI? Unique transaction identifier. उसका component कौन-कौन से हैं? Anyone applying for LIC? You are applying. कर रहे हो? प्रीमियम अभी भी 10% ही है. 67 रुपीस. नहीं 85 रुपीस हो गया. नहीं 85 हो गया. बट स्टिल अभी भी डिमांड आई थिंक सेकंड या थर्ड डे जब सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ जाए ना एक बार, यू नीड टू वेट फॉर द सब्सक्रिप्शन फिगर. वो पता है ना कि डे 1 के बाद आता है. कौन से व्हाट आर सब्सक्रिप्शन फिगर्स पहले ये बताओ. लेकिन वो तो आफ्टर 3 दिन के बाद पता चलेगा. बट 3 दिन चलता है ना आईपीओ. तो ऑन डे 1 how much HNI is applying, how QIIs are applying, how retail is applying, तो वो day 1 पे ही पता चल जाता है. मतलब day 1 खत्म हुआ तो figures will be coming. But again उसका allotment process और हमारा हाँ एक ही चीज पता चल सकता है कि how much that particular IPO is in demand in the market. अगर बहुत ज्यादा डिमांड में ऑटोमेटिकली वो ग्रे मार्केट प्रीमियम ऊपर चला जाएगा. Day 2 के बाद you find it the retail subscription figures are good, then you go for the IPO. 100 रुपए मिल सकता है. और कितना 15 शेयर्स है ना अप्रोक्स, इतना ही होगा. 1000 का है तो 1500 अप्रोक्स यू कैन एक्सपेक्ट इन वन आईपीओ. 1000 से 1500 के बीच में कुछ भी मिल सकता है. बट आपको उसमें भी एक ट्रिक है. 9:15 को स्टार्ट हो जाता है मार्केट, राइट. अब आईपीओ का लिस्टिंग जब होता है 9:45 तक यू कैन प्लेस योर सेल ऑर्डर. ठीक है, तब तक आपको पता चलता है कि कौन से रेट पे सेल हो रहा है. 940 से 945 में यू हैव टू बी शार्पली ट्रैकिंग इट. एंड अगर आपको लगता है कि अच्छा 100 रुपए मिल रहे हैं, कीप दैट प्राइस विथ योर ब्रोकर. ठीक है, 9:45 के बाद यू कैन नॉट एग्जीक्यूट. बिटवीन 9:45 टू 10 AM 15 मिनट का सेटलमेंट टाइम होता है, उसमें यू कांट ट्रेड इट. 10 बजे के बाद दैट स्टॉक विल गेट लिस्टेड ऑन द मार्केट और तब उसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा. तो अगर 10 बजे आपका वो सेलिंग लिमिट वाला प्राइस आ गया तो योर ऑर्डर विल बी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड.
ठीक है, तो अगर 949 है, कितना है आईपीओ इश्यू प्राइस? नहीं है ना? हाँ, तो अगर मान लो आपने 1100 का लिमिट रखा है फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस पे, और 1100 पे खुल गया, तो योर ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड, 150 रुपये मिल गया बस, और इंटू 15 तो 2200 के आसपास होगा, 2000। बट स्टिल इंश्योरेंस सेक्टर आई डोंट नो कितना पेनिट्रेट करेगा, होना चाहिए, बट एल का ड्यूअल वर्जन वाला वो समझ के बाहर है थोड़ा। द ओनली थिंग इज इट इज द लार्जेस्ट एंटिटी और बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, बस दो ही चीज है। तो कंपनी का कुछ डूब डूब नहीं सकता है, लेकिन एस्केलेट करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा, एंड दैट विल प्योरली डिपेंड ऑन द सब्सक्रिप्शन फिगर्स, क्योंकि महंगा लग रहा है अभी। 500 to 700 का रेंज होता ना तो अच्छा लगता, तो डायरेक्टली 1000 मिल जाता उसमें, और रेट ऑफ रिटर्न विल बी गुड। अगर 700 पे भी डाला होता एंड 300 रुपीज यू आर गेनिंग, तो 3/7 कितना होता है? 42%? नहीं, 3/7 इज, हाँ इतना ही होगा ना, 42% ही होगा, तो वो ज्यादा गेन है, यहाँ पे 10% ही मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक 1 or 2 स्टूडेंट्स हैज इवन कुछ तो शेयर किया है आईपीओ रिलेटेड, हमारे ग्रुप में किया है या कोई दूसरे ग्रुप में था, आई डोंट नो। एनीवन हैज शेयर रिलेटेड टू एलआईसी आईपीओ एनीथिंग? हमारा ग्रुप में आज तो इतना शेयर हो रहा है, कुछ मुझे ही पता नहीं चल रहा है कौन क्या शेयर कर रहा है। वो तो दैट इज दैट फंडामेंटल एनालिसिस पर्सपेक्टिव था, रेशियोज हमने जो पढ़े थे लेवल 1 में, पी रेशियो, ईपीएस, आरओसीई, आरओई, वो सब है, यू कैन जस्ट कंपेयर इट, वैल्यूएशन के बेस पे ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एक तो ऑप्शंस का ऑप्शन ही कैंडल स्टिक्स का भी डाला था बेसिक्स मैंने वीडियो, अगर किसी को मतलब जस्ट वांटेड टू हैव दैट, और पीडीएफ डाला हुआ है, बहुत सारे हैं, इतना टाइम नहीं रहेगा एक एक पीडीएफ। ठीक है चलो, now see how that particular this thing is occurring over here. So for example, do you have a CFTC USI namespace मतलब identifier है? कौन सा सिबा 11? अच्छा, कौन सा मेंशन है मेल में लिखा हुआ? थर्ड है ना? हाँ, तो ये वाला 11 भी आ गया है आपके पीछे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस बार, पता नहीं स्ट्रेंथ ज्यादा है, 37 है शायद। Now, in that particular UTI identifier, whether the namespace or that number has been mentioned or not. If no, then 20 character global LEI number is been mentioned or not, that needs to be checked. अगर वो नहीं है तो वहां से 7 to 16 वाला जो UTI का प्रीफिक्स कैरेक्टर मेंशन्ड है कि नहीं है वो चेक करेगा। अगर वो भी नहीं है तो 7 to 16 another UTI prefix code will be checked. So this is how a performance check, not performance check, but that reference check will be carried out in the system. ये आपको करना नहीं है, लेकिन automatically your system will check कि जो reference number आया है whether it is matching to our whatever trade identifier numbers or number systems have been entered into the system. अगर 16 डिजिट वाला हमारे सिस्टम में वर्क करता है तो वो उसको क्रॉस चेक करेगा, अगर 13 डिजिट वाला है तो उसको क्रॉस चेक करेगा, दैट 1 by 1 प्रोसेसेस विल बी फॉलोड। अगर किसी से भी चेक नहीं हो रहा है या किसी से भी कंफर्म नहीं हो रहा है, यू नीड टू इमीडिएटली सेंड एन ईमेल टू योर पार्टी और काउंटर पार्टी जो भी है कि आपका रेफरेंस नंबर गलत है या रेफरेंस नंबर इनकरेक्ट है, प्लीज सेंड मी द एक्यूरेट नंबर। अनलेस एंड अंटिल दैट योर ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, okay, now let's move on to the another master agreements, ISDA. So is X1 International Swaps and Derivatives Association. What is ISDA? International Swaps and Derivatives Association. It was formulated in 1985 with 12-member institutions and spread across 58 countries. Now types of members could be primary member कौन रहेंगे? Dealers and brokers, ex-investment banks and commercial banks. Associate members will be service provider, ex-brokers, law firms and accounting firms. And subscribing members will be end users, ex-financial institutions and government entities. So just write who are the members of ISDA. Members of ISDA.
Done. Primary members, associate members and subscriber members. ठीक है, इसको याद रखेंगे वो that method we have learned, right? Mnemonics वाला SAP याद रहेगा directly. Subscribers, associate and primary. Anything you can formulate. याद है क्या सबको वो मेथड mnemonics वाला? First initial of every that thing. हाँ, the difference between yeah equity and शायद preference में था मेरे ख्याल से. एसोसिएट मेंबर्स का तो इजीली है, सेल फॉर्म हो रहा है SALE. So just remember like a story, associate members are on sale. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कितनों को नहीं आया समझ में? हाँ है ना. सर्विस एस का सर्विस प्रोवाइडर, ए का अकाउंटिंग फर्म, एल का लॉ फर्म एंड ई का एक्स ब्रोकर्स. ओके, देन इजीली यू कैन रिकॉल इट. सेल कुछ भी फॉर्म कर सकते हो. स्टोरीज कैन बी अनलिमिटेड. क्रिएटिविटी आनी चाहिए वहां पे थोड़ी. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ISDA? Of course, identify and reduce the sources of risk through master agreements, publication of documentation materials related to different regulatory mechanisms, and legal opinions on enforceability of netting and collaterals. Second, promotion of risk management practices through standardization of documents and fostering high standards of commercial conduct. So ultimately, I think despite एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, write one assignment. ठीक है, write one assignment. उसमें लिखो identify one case study that has breached ISDA agreements. ISDA agreements. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी तो एक कंपनी होनी चाहिए जिसने ये ब्रिज किया. अदरवाइज व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपिंग सच मैकेनिज्म्स? OTC एज वेल एज इवन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी होगा. ज्यादातर ऑफलाइन ही होंगे. OTC होगा. The reason is why, because say for example अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है UK US का है, ठीक है, उसको इंडियन मार्केट का डेरिवेटिव्स खरीदना है, डायरेक्टली उसके पास वो अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट जो भी है. ठीक है, तो व्हाट ही विल बी डूइंग इज ही विल बी कनेक्टिंग थ्रू एनी ऑफ दिस इंटरमीडिएरीज एंड सीकिंग देयर हेल्प, और बोलेगा अच्छा कि ये डेरिवेटिव्स खरीद लो, ये मत खरीदो, जो भी है. तो इट हैज टू बी थ्रू OTC मार्केट. डायरेक्टली उसके अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन हाँ पैसा विल बी ट्रांसफर्ड अप्रोप्रिएटली. जो भी कनेक्शंस होंगे ही कैन यूज दैट थिंग. Corrective measures, and fourth option is treatment and risk management. So all the different traders or brokers, who all participants, whichever we have seen in this ISDA, they need to make sure of risk management through different regulatory compliance. Okay. So ISDA documentation is more of like a substitute for economic legislation. Existing economic laws were not enough and new products were started appearing. So for that particular perspective, there was a need of such a regulatory compliance document which will allow all these particular participants to follow those compliance, to make sure that all the agreements are being followed in a directive manner as per the laws made. And thirdly, all these documents or any of these entities are not allowed to breach any of these laws. Okay? So this is more of like the architecture of the document. Master agreement hoga. All the standard terms and conditions will be mentioned. Multi-currency है तो cross-border master agreement, local currency है तो single jurisdiction. Why? Now what is jurisdiction? आपने कहीं पे तो पढ़ा होगा. Say for example, अगर एक UK का client है, ठीक है, अब उसने कुछ गलती की है,
either it is a criminal offense or it is a civil offense, जो भी है, from regarding this particular perspective, उसका execution of that case, legal case कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा कि यूके में होगा? हाँ? Why? Because he resides in that. No, it's not always necessary. That jurisdiction will be decided by both the parties. If you have heard, कहीं पे तो आपने ये subject to this jurisdiction only, वो पैकेट के पीछे लिखा होता है कहीं प्रोडक्ट्स के, subject to state jurisdiction only. If you have heard somewhere, ठीक है? तो why? अब फॉर एग्जाम्पल अगर गोवा का कुछ प्रोडक्ट है एंड आई एम यूजिंग दैट प्रोडक्ट इन गुजरात और उसके ऊपर मैंने लॉ सूट फाइल कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो थोड़ा गोवा से मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए वो गुजरात आएगा या wherever I am staying. So those particular companies will explicitly mention कि subject to state jurisdiction only. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई लॉ सूट फाइल करना है, आप गोवा आओ और वहां पे केस फाइल करो, ठीक है? Getting it? So this is the same reason over here. If there are multiple clients and if any legal issue is arising, the jurisdiction can be single in the case of the single, मतलब एक जो भी मतलब स्टेट का या नेशन का जो फाइनल होगा वहां पे केस फाइल होगा. Otherwise it will be international depending on the terms and conditions of the client as well as the other counterparty. ठीक है? Otherwise just imagine one counterparty is from US, another one is from say from Australia or China or India, then at least that 1 or 2 days of journey will be taking that time, consumption time. So ऐसे तो बहुत सारे legal cases will start on accumulating. So it will be difficult even for the legal entities also to resolve on these cases. The jurisdiction is always being decided by both the parties. That is important. Second, schedule is more of like what all the different laws are being made regarding different elements of the transactions. That is the schedule. Credit support documents, it will be annexure होगा पूरा different laws के related either English in language or Japanese language अगर transaction हो रहा है Japan clients के साथ, confirmations, ISDA definitions and credit support data. So just prepare this architecture. It is important. One of the important architectures being used in case of ISDA agreements. ठीक है? आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए. What are standard terms? What is a schedule? What is credit support documents? What are confirmations? And what are ISDA definitions? Why definitions will be provided? Because certain clients will not be aware of few technical terminologies. उनको ये नहीं पता होगा कि कॉल ऑप्शन का ऐसा कोई अलग से नाम है या कोई मीनिंग होता है. तो दैट इज टू बी एक्सेप्टेड. जैसे ग्लोसरी नहीं आता है हर एक टेक्स्ट बुक के पीछे. That is how what is being reflected over here.
11 बैच 11 हाँ सिर्फ 11 just write this. What is credit support annexure? It is a legal document which regulates credit support collateral for derivative transactions. It is one of the 4 parts that make up the ISD master agreements, but it is not always mandatory. Why? Because it only defines the terms and the rules which the collateral is posted for. So annexure hoga related to either the master agreement terms and terminologies, but it is not necessary unless and until everything is being clarified. Okay. बहुत सारी बैच है, पता ही नहीं चल रही कि खत्म हो रही कि चालू हो रही. That okay. कैसा लगा वैसे सिबॉक 10 वालों के साथ? कुछ हुआ कम्युनिकेशन बाद में? So what is the delivery amount in that? It is the amount that the credit support amount exceeds the value of all the posted collaterals held by the secured party, and collateral must meet the eligibility criteria in the agreement. For example, which currencies it may be in, or what types of bonds are allowed, and which haircuts are applied. Okay, so basically collateral का भी criteria होगा. One thing, which currencies. Second, what type of bonds are allowed. It might happen that not all the bonds will be allowed. And third, which haircut margins, either 5%, 10%, or 15% are allowed or not. That will depend on the criteria mentioned in that agreement. Delivery amount is the amount which the credit support amount exceeds the value of all the posted collateral. Now say for example secured party ने पूरा collateral रखा हुआ है 10 लाख का, ठीक है. Actual portfolio अलग का होगा, collateral is of 10 lakhs. Now in that particular case you have to mention that amount of 10 lakhs against which all these transactions are carried out. ठीक है, आपको वो 10 लाख का ही वो पूरा disclosure बताना है in the case where different securities are being mentioned for.
If on any, फिर credits for annexure में और क्या आ सकता है? If on evaluation date the delivery amount is equal or exceeding the pledger's minimum transfer amount, the pledger must transfer the eligible collateral with the value at least equal to the delivery amount. मतलब अब जैसे मैंने क्या बोला था कि मंडे को लिया, फ्राइडे को सेल कर दिया. Now just imagine a scenario, फ्राइडे तक मैं लॉस में चल रहा था. The broker told me that you have to either close the positions. लेकिन मैंने उसको ये बोला कि जितना लॉस हो रहा है उतना एक्स्ट्रा अमाउंट आई एम एडिंग इनटू माय अकाउंट. से फॉर एग्जांपल वो 3 लाख में से 1.5 लाख का लॉस चल रहा था, उसको मैंने ये बोला आई एम 1,50,000 एडिंग मोर इनटू माय अकाउंट एंड अलाउ मी टू हैव दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स एज इट इज. कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज अगर गलती से अगर और लॉस जा रहा है तो मेरे पास एडिशनल सरप्लस कैपिटल है. पहले 3 लाख का था, अब 4.5 लाख का हो गया है. तो broker is saying that okay, that is fine, but it will happen only if the pledger, उसको pledger बोलेंगे. Why? Because he is pledging his security against the collaterals. He will need to transfer the eligible collateral of worth of 1.5 lakhs, which is equal to the delivery amount. Correct? So this can happen provided all these conditions are met. समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? ना रोल ओवर तो नहीं होगा, स्टॉक्स है ना, फ्यूचर तो है नहीं. अगर स्टॉक्स है तो रोल ओवर कैसे करोगे? मुझे पोजीशन होल्ड करना है, ठीक है. डिस्पाइट द फैक्ट आई एम नोइंग कि आई एम इनटू रनिंग 1.5 लाख रुपीस लॉस, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते या एक हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ तो इस स्टॉक में मूवमेंट आएगा, बिकॉज ऑफ व्हिच माय प्रॉफिट्स विल बी कमिंग आउट. नाउ आई डोंट वांट टू बुक अ लॉस ऑफ 1.5 लाख, सो व्हाट आई एम डूइंग इज एडिशनल 1.5 लाख ऑफ रुपीस आई एम डिपॉजिटिंग इनटू माय डीमैट अकाउंट. ठीक है, तो ब्रोकर बोलेगा ठीक है, आप 1.5 लाख का जो लॉस है वो उसके साथ कंपेंसेट हो जाएगा ना. पहले 10 लाख का पोर्टफोलियो था, उसके अगेंस्ट में कोलेटरल कितना मिला? 3 लाख का. अब 3 लाख में से 1.5 लाख का लॉस जा रहा है, तो 1.5 लाख का एडिशनल सरप्लस कैश आई एम डिपॉजिटिंग इनटू माय डीमैट अकाउंट. ओके, दिस इज द प्रोसेस. So why is that just Monday to Friday or it's more of a like a leverage being provided in that period only. Otherwise क्या होगा? तो otherwise तो मतलब आप जितना टाइम होल्ड करना कर सकते हो. It's not that particular situation, but broker will say that I can provide you a leverage for only 1 week. Okay, extra leverage as per the SEBI norms nowadays, that leverage has been reduced drastically. पहले बहुत मिलता था, अभी जितना पैसा है उतने का ही ट्रेड करना है. But now these brokers are, what are they doing? Just because to gain more brokerage, have better relations with their clients or whatever customers are there, they do provide this particular facility, कह सकते हैं extra, but not on every stocks, only few stocks. ठीक है, let me show you one thing. अगर यहाँ पे भी अगर है, let me just check. Which is any कोई ब्रोकर का आइडिया है क्या किसी का? नहीं, I think Ami broker is there which is providing that leverage. या तो एलिस ब्लू है, कोई तो है जो ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है. So these are the different taxes we have considered. Brokerage, then security transaction tax, exchange transaction or turnover tax, GST, SEBI charges and stamp duty. ठीक है, तो इतने components रहते हैं whenever you are carrying out any transactions. Brokerage कहाँ पे? See, for intraday trading, it is up to 20% of the trade value, maximum 5x times leverage. 5x times मतलब अगर 10,000 का कैपिटल है तो मैक्सिमम यू कैन बाय ऑन एन इंट्राडे बेसिस 50,000 का स्टॉक्स. ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा. और अगर 10,000 के ऊपर लॉस चला गया
तो उसी दिन आपका पोजीशन वो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है, वो आपको पूछने भी नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द लेवरेज इज बीइंग यूज्ड। मतलब अगर छोटा कैपिटल है, समवन वांट्स टू यूज, लेकिन वो इंट्राडे में फिर आना चाहिए 50,000 से भी पैसा बनाने के लिए। दिस इज हाउ द एक्चुअली ये पहले हुआ करता था 20x। तो अगर 1 लाख है ना, तो लोग पहले तो मतलब ओवर लेवरेज 20 लाख तक चले जाते थे, दे यूज्ड टू बाय इट। ठीक है, फिर सेबी को लगा ये बहुत गलत चीज हो रही है। व्हाई? बिकॉज पीपल वेर मेकिंग ह्यूज लॉसेस। अगर 20 लाख का माल आपने लिया हुआ है और इंट्राडे में आपको स्क्वायर ऑफ करना है पोजीशंस, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू मेक अ लॉस, द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी मोर। नाउ विद दिस ऑब्जेक्टिव, it is that particular region that leverage conditions are nowadays very stringent. ठीक है, अच्छा 9 लोग हो गए क्या? Yeah, online students, any doubt so far? No, sir. No, sir. I hope everyone is awake. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पहले I think we have a new norm also. Please everyone switch your camera. Everyone. अरे वाह, चलो गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. चलो, अच्छा हनान is also there. Yeah, हनान। अब वो Good morning, sir. which batch? About 11. About 11. हाँ यस, बाकी और कहाँ पे गए? अतुल, प्रज्ञा, राज। चलो गुड। आके बंद नहीं करना है, ये अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ मैं सबका। अरे अच्छा पल्लव, पीपल आर लुकिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्लास इज वेरी मच एक्साइटेड टू सी यू। हाय वाई बोलना है तो बोल दो। अच्छा कुछ बोलना है क्या पल्लव? कुछ किसी को कोई मैसेज? हाँ, माइक आपका बंद है। नहीं ऑन है, ठीक है। अच्छा चलो, अनान एनीथिंग सेवैया फॉर टुडे? Sure, sir. ईद मुबारक भाई। Thank you, thank you. या ठीक है, सेवैया आ रही है ना आज हमारे लिए? हाँ sir, हाँ. चलो ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। I see a controversy. वही मैं देख रहा हूँ, नीचे कुछ आ रहा है उसके रिलेटेड, प्रॉबेबली नहीं है। हाँ क्या? आज ISDA खत्म करते हैं, उसके बाद आई थिंक कोलैटरल्स का बेसिक्स करके वी विल कनेक्ट टुमारो। ठीक है, फिर उसके बाद एक ही रहेगा ना आपका रिकंसिलिएशन, बस। तो लेवल 2 तो उसके बाद खत्म है। आई होप सो, बट थियरी तो है उसमें भी। बट अगेन सी रिकंसिलिएशन विल कम टू यू, या तो फिर उसका बोल सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ओनली इफ यू आर गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट या रिकंसिलिएशन रिलेटेड, या मतलब जिसको बोलते हैं, बट अगेन इफ देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट थिंग या डायरेक्टली डेरिवेटिव्स वाला ट्रेडिंग थिंग, देन रिकंसिलिएशन वगैरह कुछ नहीं आएगा आपको। मतलब पर्टिकुलर जॉब रोल की बात हो रही है यहाँ पे। ओके,
जितने भी अकाउंट्स है उनके जितने भी ट्रांजेक्शन है सब मिला के उनको एंड में चेक करना है ऑल द एंट्रीज आर करेक्ट और नॉट वेदर क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट, दैट्स इट। बस एक ही करना है काम, अगर पूरा चैप्टर का डेफिनेशन बोल दूं तो। अब जिनका अकाउंट्स पर्सपेक्ट कोई है क्या अकाउंट्स वाला मास्टर्स? हाँ तो आप हमें सिखाओगे रिकंसिलिएशन, ठीक है? एग्जांपल्स तो बता सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है? फिर वी विल गो इनटू दिस बिकॉज यहाँ पे प्योर अकाउंट्स नहीं होगा, ऑफ कोर्स योर डिफरेंट ट्रेड ट्रांजैक्शंस विल बी देयर फर्स्ट एंड देन उसके एसोसिएटेड अमाउंट्स है जो भी एक्सचेंज हो रही है वो, एंड आफ्टर दैट क्लाइंट टू क्लाइंट यू नीड टू सेटल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, 15 मिनट्स क्विक ब्रेक और 10 बजे आ जाओ एंड वी विल कंप्लीट आईएसटी। ठीक है, बहुत टाइम मत लेना इडली खाने में, ठीक है? Yeah, online students 15 minutes break. Okay, sir. Yes, sir. आराम से। Boy.
Thank you. सबलाइट्स कैसे बंद हो? अच्छा
यार क्या बस करता है बताओ सैनिटाइजर ठीक है ना नहीं तो कोविड कर रहे हैं पढ़ाई
चलो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. Online students, everyone is back. Yes, sir. ठीक है, चलो. Everyone. हाँ, कोई बाकी? हाँ. अच्छा, कौन सा लेवल 2 का? लेकिन वैसे देखा जाए तो लेवल 2 का आपको एक बार पीडीएफ ही 1 या 2 बार आपको स्कैन करना है. इवन इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू द लेक्चर, क्योंकि दिस लेक्चर्स आर समवेयर लाइक, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल कम है यहाँ पे. इट्स मोर ऑफ लाइक अ मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स. तो आपको गो थ्रू करके इंपॉर्टेंट नोट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जो भी बोले हैं, जस्ट गो थ्रू देम वंस अगेन. हाँ, इसमें आपको वही करना पड़ेगा. और व्हाट यू कैन डू, वन मोर थिंग इज ट्रेड लाइफ साइकिल, कोलैटरल रिकंसिलिएशन और ये अपना ISDA. कोई यूट्यूब का वीडियोस मिल रहा है कोई अच्छा वाला, तो जस्ट पुट इन द ग्रुप. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ ऑल दिस थिंग्स आर वर्किंग. दैट्स इट. और कुछ ज्यादा इसमें चाहिए नहीं हमको नॉलेज. ठीक है, चलो. We are now moving to supporting materials. Okay. ISDS produce a wide array of supporting materials for their master agreement, which will be used for preventing disputes, facilitating the consistent use and interpretation of the master agreement. So they have prepared one master agreement. तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो they will be providing all the details about terminologies used, या technical terms या jargons which will be used. An entire explanation will be provided so that at least any particular employee or individual or client or counterparty will come to know कि इसका meaning क्या हो रहा है. One thing. Second, facilitate consistency. मतलब यहाँ पे जो norms and regulations है, the same norms and regulations will be applied for the clients who are dealing or trading from external countries. Third, preventing disputes. Automatically, of course, अगर आप एक ही consistent regulations के हिसाब से आप trade कर रहे हो, in that particular case, it will definitely allow for prevention of disputes. Now, what are the basis for division of definitional booklets? Credit derivative, currency derivatives, equity derivatives. For all this, each of them, there will be different documentation prepared. Credit matlab credit default swaps, currency derivatives, and equity derivatives. The documentation is designed in a way to prevent all types of disputes and facilitate the consistent use and interpretation of the master agreement. So just write one line or just highlight it. What is master agreement? What is master agreement? Now, regarding confirmations, contract between the parties is found when the derivative transactions are entered into either orally, matlab OTC market, or through electronic means. The evidence of the terms of the transaction is contained in a confirmation. So, say for example, it will include the trading advice or the contract note, which we have discussing so far. Contract note hoga, jahan pe all the transaction details will be mentioned. It can usually be a short letter or an email or even a fax document. The form of the confirmation is set out in the master agreement. Now, all those details you need to input in your master agreement data. तो हमने वो जो SAP वाला एक फॉर्मेट देखा था, if you remember, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आपके पास इतना ईमेल ही आएगा. ट्रांजेक्शन अमाउंट, क्लाइंट, काउंटर पार्टी, कस्टोडियंस अमाउंट, करेंसी, एनी अदर एक्स्ट्रा डेटा या जो कुछ भी है, वो डेटा आपको फिर फीड करना है कहाँ पे? मास्टर एग्रीमेंट जो रहेगा SAP मॉड्यूल और एनी अदर मॉड्यूल्स, देयर यू नीड टू एंटर द डेटा. और अगर डेटा ऑलरेडी है तो क्रॉस चेक करना है. इट कैन बी बोथ द वेज. ठीक है. So you need to make sure that confirmation will be done when it should contain more than dates, amounts and rates. Confirmations are exchanged to minimize the possibility of a dispute. अगर कोई दिक्कत होगा तो definitely it will create a dispute and the transaction will be put on hold unless and until further notices arrive. Schedule and paragraphs are used to make all the amendments and customizations of the master agreement. It includes elections of the various options presented. So basically it will definitely include what type of other data and information will be gathered in the master agreement that will be written or mentioned in your schedules. वो schedule generally आता है glossary के साथ, पीछे होता है generally. अगर कोई भी आपका एक document का booklet है या brochure है या कोई pamphlet है, at the end of day एक पूरा एक आपको detail annexure type का होगा. Annexure 1, Annexure 2. The Annexure 1 will be schedule. Annexure 2 can be your glossary or the terms which you will find it difficult to understand or use it.
ठीक है. Now what comprises of a schedule? Electronic elections referred, amendments and additional terms. So write what comprises of a schedule. What comprises of a schedule? It comprises of elections referred, amendments and other additional terms. अब उसमें क्या क्या डेटा हो सकता है? तो अंडर इलेक्शंस रेफर्ड, द पेमेंट मेजर्स और द मेथड्स यूज्ड, द थ्रेशोल्ड रिलेटिंग टू सर्टेन इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट एंड अदर ऑफिसेस. Amendments, of course, will be made if the party agree to change the terms of their master agreement. Amendments or the changes will be made only if both the parties are agreeing upon changing their modifications. Any other additional terms, such as a set of clause between close amounts or the amounts going under the contracts, will be mentioned in additional terms. So additional terms में अगर कोई भी ऐसी कोई चीज mentioned है, जैसे for example we discussed about that Friday settlement, कि मंडे को ट्रांजैक्शंस हुए थे, फ्राइडे को सेटल करना है, तो नाउ दैट थिंग विल बी मेंशन क्लियरली, ऑल द ट्रेड्स हैव टू बी सेटल्ड ऑन एवरी फ्राइडे. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. करेक्ट. तो दैट आर कंसीडर्ड एज एडिशनल टर्म्स. The printed form of the master agreement is never amended. Only other negotiations or other changes will be exchanged on the presumption that the standard terms will be always be remaining the same. Any other information or extra things will be included over here. Now, ISDA master, what is the heart of document? Once signed, it governs all the future individual transactions entered and negotiation of master agreement with current prudence. The various provisions are, now what are the provisions of ISDA master agreement? Write it down. What are the key provisions of ISDA master agreement? What are the key provisions of ISDA master agreement? And that document is also known as a boilerplate document. ठीक है, मतलब ये जो provisions जिसमें ये mention किया जाएगा, उस document को बोलेंगे boilerplate document. ठीक है. Now it comprises of this many things: interpretation, conditions, netting मतलब net effect जो हम दे रहे हैं वो, withholding tax, any tax if we are withholding, representations, undertaking, early termination of the contract, and governing laws and regulations. Okay. Written, everyone? Now there have been different versions of this ISDA agreement. Why? Because for example, in the earlier times, there could be few provisions included, but later with the changes in the time, new and more additional elements were also included to ensure that all the transactions were carried out in a streamlined manner. ठीक है. Otherwise वो issues हुआ करते थे कि ये डेटा नहीं है, वो information नहीं है, client का नाम नहीं है, counterparty का डेटा नहीं है,
डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मेंशन नहीं है. So all those issues take place at that time, and because of which new versions of this particular document were constantly upgraded. And even now also, to a certain extent, you can find that current version of that master agreement will also get upgraded, okay, if required. Schedule integral. Okay, now what is the schedule? It is of course an integral part of the master agreement. It includes customizing by amending standard terms and other details, negotiation skill, processing, drafting required. Credit rating of the clients will be considered, of course. Time consuming process है. Credit support documents will include all the annexures and other deeds and agreements. So just the features of that schedules. तो ये है आपका entire master agreement. Definition होगा, for example, interest rate derivatives क्या है, किसी को नहीं पता है तो वो नहीं था. Common commodity definitions were included. Then forex derivatives, then credit rating derivatives, interest rate derivatives, equity, again credit, they got amended. So more or less like in this, property or index definitions, ISDA government bond definitions, ये पहले सिर्फ पहले interest rate derivative था 91 में, फिर 93 में उन्होंने commodity derivative को include किया. After that 98 में FX forex को किया, 99 में credit को revise किया वापस, ठीक है, sorry credit को add किया, 2000 में interest rate को revise किया, considering the changes. 2002 में equity derivatives, even 2008 में inflation derivatives. तो जितने नए instruments आते जाएंगे और उस हिसाब से उसके डेरिवेटिव्स के डेफिनेशंस, हाउ दे विल बी ट्रेडेड, व्हाट विल बी द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपका मास्टर एग्रीमेंट इस हिसाब से चेंज होता जाएगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स ओवर हियर. ठीक है. व्हाट आर द पेक्युलरिटी फॉर कंफर्मेशन? फॉर एग्जांपल, यू नीड टू चेक द ट्रेड स्पेसिफिक टर्म्स आर डॉक्यूमेंटेड, वो हर एक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वन थिंग, इट हैज टू बी अ यूनिक रेफरेंस नंबर फॉर एवरी ट्रेड. इट हैज टू बी फॉरवर्डेड टू द काउंटर पार्टी फॉर एक्सेप्टेंस. ऑफ कोर्स 48 आवर्स के बाद आपको वो मेल भेज देना है काउंटर पार्टी को, ट्रांजैक्शन इज एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. एनी पर्टिकुलर टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय ISD हैज टू बी फॉलोड. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पेमेंट टर्म्स विल बी देयर, कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो आपको 48 आवर्स में आपके अकाउंट में पैसे हो जाने चाहिए, सो दैट वी विल बी फॉरवर्डिंग द ट्रांजैक्शन. Confirmation will be prevailing the schedule. Language additions if required. Why? अगर कोई स्पेन से करता है ट्रांजेक्शन, इफ यू ओनली अंडरस्टैंड स्पेनिश, तो स्पेनिश के हिसाब से आपको डेटा डालना पड़ेगा. बट ऑफ कोर्स दैट पीपल विल बी देयर ओवर. एंड एग्जीक्यूशन वर्सेस एक्सचेंज. तो अगर आपका बेस्ट प्रैक्टिस है तो पेपर कंफर्मेशन कैसे जाएगा? T+5 डे में नॉन रेसिट, T+10 डेज के बाद मिसमैच होता है तो एस्केलेशन रेज करना है, फिर एग्जीक्यूट कर देना. दिस इज हाउ द डेज विल बी टेकिंग प्लेस. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है तो मैक्सिमम इन 7 days योर नॉन रेसिट टू एग्जीक्यूशन विल बी टेकिंग प्लेस. नॉन रेसिट मतलब इस दिन को ट्रेड स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, आफ्टर 5 days तक उसका रिसिप्ट आपने एक्सेप्ट नहीं किया था. जैसे ही एक्सेप्ट किया, यू हैव 5 days टू चेक वेदर इट इज मैचिंग विद द गिवन रेकॉर्ड्स और नॉट. अगर नहीं है तो अगले 5 दिन में वो मिसमैच का एरर फ्लैग आपको रेज करना है. अगर रेज करने के बाद 5 दिन है, उसको एस्केलेट करना है, रिजॉल्व करना है. वंस इट इज गेटिंग रिजॉल्व, यू हैव 5 more days टू एग्जीक्यूट दैट ट्रांजैक्शन. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो वो मैक्सिमम T+7 days में ही हो जाएगा. सो जस्ट राइट द टोटल प्रोसीजर टाइम फॉर पेपर कंफर्मेशन इज मैक्सिमम 20 days. द प्रोसीजर टाइम फॉर पेपर बेस्ड कंफर्मेशन प्रोसीजर is maximum 20 days. Similarly, the procedure time for electronic based confirmation is maximum 7 days. Sir, please repeat. The procedure time for paper based confirmation is maximum 20 days, and the procedure time for electronic based confirmation is maximum 7 days. उसमें 20 दिन है, इसमें 7 दिन है. ठीक है. Done.
Now, while preparing this ISDA master agreement, there are certain provisions that you need to check and include. जैसे obligation of the party towards the payment, representation of whatever the securities have been carried out for transactions, any agreements related done between both the parties, termination of the transaction period, consequences of termination if terminated in between, tax consideration and other provisions. ठीक है, तो इतने provisions add होने चाहिए आपके मास्टर डॉक्यूमेंट में या मास्टर एग्रीमेंट में. ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब पैसा दे दिया है कि नहीं दिया है, रिप्रेजेंटेशन मतलब विच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज यू हैव ट्रांजैक्टेड, थर्ड एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द गिवन एग्रीमेंट, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कौन से टाइम के बाद ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने में, व्हाटएवर. अगर बीच में कोई टर्मिनेट कर देता है 3 महीने में, 2 महीने में, तो उसके कंसेक्वेंसेस क्या रहेंगे, व्हाट विल बी द पोस्ट इफेक्ट ऑन द एंटिटी हु इज टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जैसे मान लो पेनल्टी लगता है या ऐसा कुछ, एनी थिंग्स इफ इट इज मेंशन्ड, टैक्स कंसिडरेशंस, लोकल टैक्स या ग्लोबल टैक्स जो भी है, एंड अदर प्रोविजंस इफ यू वांट टू इंक्लूड. So obligations obliges the party to make an ongoing payment and delivery obligation set out in each confirmation. No event of default should be there or potential event of default. अगर कोई बायर है तो उसका एटलीस्ट क्रेडिट रेटिंग या तो फिर उसका एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि वो डिफॉल्ट नहीं होगा बिफोर यू इनिशिएट द ट्रांजैक्शन. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट, वन थिंग. सेकंड, वो बीच में टर्मिनेट नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट अनलेस एंड अंटिल देयर आर सम वेरी सीवियर सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, no early termination date designated. Once these two things are finalized, तब जाके उसको बोलेंगे you please make the payment. ठीक है, so these are the conditions which are precedent, मतलब पहले आएगी before the client is making the payment or client is entering into the master agreement. One thing, payment netting मतलब payment effect कैसे दिया जाएगा. So off on the same date होगा in the same given mentioned currency in respect of the given transaction. So say for example, अगर आपको $100 million ट्रांसफर करना था, ठीक है, जैसे मान लो ग्रॉस इसको देना था 100 मिलियन और इसको देना था 25, तो नेट इफेक्ट कितना हुआ 75. नाउ आपको वो पे करना है डॉलर्स में. वन थिंग, नेट 75 हैज टू बी पेड बाय पार्टी बी टू पार्टी ए ऑन द मेंशन्ड डेट. मतलब अगर आज ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है तो सेम डेट में अगर उन्होंने एग्री किया है कि आज ही पेमेंट आपको दे देंगे, इन दैट केस ओनली $75 million विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द अकाउंट ऑफ पार्टी ए. क्लियर? So these are how the payment or the net effect is been carried out. Net effect मतलब पार्टी बी को एक्चुअली देना था $100 million, पार्टी ए को लेकिन देना था 25 मिलियन, तो डिफरेंस कितना हुआ 75. So 75 is the net effect. We have already seen that gross and net effect, right, in level 1. Payments which are made without deductions or withholding unless required by the law. If law does require, payments must be grossed up. मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी या ट्रांजैक्शंस में अगर गवर्नमेंट वाला या कोई रेगुलेशंस के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है, then that particular taxation amount has to be included in your final transaction value. $75 million को ट्रांसफर करना था, लेकिन 75 के ऊपर अगर कोई टैक्सेबल एप्लीकेबल है तो वो आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द क्लाइंट्स विल बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे ना. अगर ज्यादा टैक्स आ गया तो why they will be preferring to have such a transaction in India? कोई दूसरी जगह पे जाके कर लेंगे. ठीक है, the interest is payable on defaulted payment obligations until early termination date and thereafter no default interest or default deliveries. So of course अगर default करता है 1 महीने के बाद वो पेमेंट नहीं देता है तो उसको वो जितना भी अमाउंट पेंडिंग है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट 10%, 12%, 6% जो भी एग्री किया होगा उतना इंटरेस्ट पे करना होगा बाय पार्टी बी टू पार्टी ए. ठीक है, दैट इज जस्ट अ डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन. Now in agreements, what will be the parties agreeing to do? They need to furnish specific information related to them, maintain all the authorization, comply with the laws mentioned, give notice of its failure to maintain the tax representatives and pay the stamp tax. ठीक है, तो parties का रोल ये रहेगा कि उनको अपनी जितनी भी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है
That has to be mentioned along with the address, along with the contact number, and also the email ID. Second, they need to make sure of following all the authorization. Third, they need to comply with the laws, give notice of that failure so that there will be no further escalations or issues with the counterparty. And finally, pay stamp tax. Stamp tax तो हर एक जगह पे आता है, ठीक है? So this is what the parties will be doing in their agreements. अब event of default, अगर fault based provision option for non-defaulting party to terminate, अगर default होता है, now there are two probabilities. पहला केस ऐसा समझो कि 1 महीने के लिए डिफॉल्ट हुआ तो सिर्फ उसको इंटरेस्ट का पेनल्टी लगेगा, बाकी सब पेमेंट्स दे विल बी मेकिंग. लेकिन ऐसा हुआ कि ये पार्टी पूरी डिफॉल्ट कर गई, ठीक है? नाउ इन दैट केस व्हाट कुड बी द पॉसिबल बेस्ट सॉल्यूशन दैट बोथ द पार्टीज कैन इंप्लीमेंट इन अ गिवन सिनेरियो. तो वो एग्रीमेंट में मेंशन्ड होगा कि इन अ इवेंट if either of the parties getting defaulted and they are unable to make further payments, they will be completely terminated from that contract. ठीक है? Applicable penalties will be discussed later, लेकिन वो mention किया जाता है. Okay. Now these are all legal perspectives. Okay. Okay. Credit support providers and specified entities. Some events of default or termination events will be triggered with respect to credit support provider. In that case, entity that supports the obligations of a party. For example, guarantee. तो अगर आपने guarantee साथ में लेके रखी हुई है, and in the case of your default, तो आपका जो guarantor होगा वो payment करेगा. If you remember, what is guarantor and guarantee banking में? हाँ, so say for example, if I have taken of 10 lakh rupees और मेरा कोई बैंक में गारंटर रहेगा. गारंटर इज मोर ऑफ कि अगर इसने पैसा नहीं दिया तो आई विल बी पेइंग यू. तो बैंक बोलेगा ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवा लेते हैं, ठीक है? सो इन द केस इफ आई एम गेटिंग डिफॉल्ट, the guarantor will be obliged to pay the remaining amount or whatever amount is remaining that of that particular loan to the bank. That is a guarantor. ठीक है? तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि the supports the obligation of parties. So say if guarantor is present and that particular norm is inserted into the master agreement, in the case of a default, guarantor will be managing the cash flows or the, whatever the amount which is left over to make the transaction successful. ठीक है? बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं. Failure to pay or deliver, it's not that important. Yeah. Breach of agreement. When a party is said to have failed to perform any agreements, तो a party is failed to perform any agreement or obligation. Basically, अगर उन्होंने interest payments नहीं दिए हैं, तो they will get be considered as default. Other party gives notice of failure. 1 महीने बाद या 2 महीने बाद नोटिस भेजना है, show cause notice जिसको बोलते हैं. What is the reason that you are not able to pay this particular payments? ठीक है? And third one will be failure is not remedied within the 30 days of the notice given. अगर आपने 30 दिन के बाद आपको नोटिस मिल गया, लेकिन उसके 30 दिन के बाद भी अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, you will be considered as completely default and your agreement will be terminated in that case. Exemptions क्या रहेगा? Notice of termination event, furnish specified information, notice of failure of a tax representation. Now there could be certain exemptions given to these transactions. If I am getting default, लेकिन अगर मैं ऐसा mention करता हूँ कि because of so and so reason I was not able to make the payments, I will be exempted from that particular thing. So my contract will not get terminated in that case. ठीक है? वो बाकी penalty के साथ continue रहेगा. ठीक है? Any doubts so far in this? Yes, सब कुछ समझ में आ रहा है. हाँ? क्या हो? लेकिन कितना समझना है वो याद नहीं आ रहा है. But see, out of all these things, only 1 or 2 will be your functional roles. ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ आपको याद रखना है या सब कुछ आपके जॉब रोल में आएगा, बट एटलीस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा था ऐसा था. तो यू कैन डिवाइड बेस्ड ऑन द चैप्टर्स ऑफ दिस लेवल 2. ट्रेड लाइफ साइकिल है तो अलग टॉपिक होगा, अलग ही जॉब रोल होगा. फिर ये सिर्फ ट्रांजैक्शन चेकिंग, वैलिडेटिंग, सेटलमेंट्स, वो एक अलग चैप्टर होगा. स्टॉक नॉट स्टॉक दिस कंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन एंड कोलैटरल्स विल बी अ डिफरेंट केस. फंड रेजिंग में कोलैटरल्स आते हैं. फंड रेजिंग के रूल्स, जॉब रूल्स आर देयर इन द मार्केट. ठीक है? तो उसमें कोलैटरल्स की जरूरत पड़ती है. और लास्ट में आता है रिकंसिलिएशन. तो ब्रॉड वे अगर देखा जाए तो 5 या 6 टॉपिक है इन दिस लेवल 2.
Now, what are the chances party will get default, failure to perform under credit support document as per the mentioned regulations, expiry or termination in full force and effect will be given to credit support document, disaffirmation and disclaims as per the credit support document. तो कैसे अगर आपका कोई क्रेडिट सपोर्ट मतलब जो काउंटर पार्टी को डिफॉल्ट कब होगा, if he is unable to perform as per the conditions mentioned in this credit support document. So just write somewhere what is credit support document. What is credit support document? ये कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं लेवल 2 के. Whatever I am giving is more of like a level 2 questions only. Now, misrepresentation will be something related to misrepresentation of the data. So, representing incorrect or misleading information, no grace period mentioned or no notice requirement being mentioned, it will apply to all such representations of data. अगर आपने मतलब क्लाइंट ने गलती से कोई मिसरिप्रेजेंट कर दिया डेटा, तो फर्स्ट यू नीड टू क्रॉस चेक एंड कंफर्म कि दैट इज अ मैन्युअल एरर और एनी अदर एरर जस्ट नॉट कैरीड आउट ऑन एन अनइंटेंशनल बेसिस. अगर इंटेंशनल बेसिस है, डेफिनेटली टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. Default on the specified transaction. Now there could be few transactions mentioned in the agreement for which default case scenarios will be mentioned. जैसे broader list of derivative, credit derivative है या repo या stocks है, और अगर client ने payment नहीं किया within the given date या in a given currency या as per the laws mentioned in that particular agreement, again the transaction will be considered as defaulted. See, defaults caused by technical failure or manual failure or good faith disputes. Good faith disputes are more of like an intentional basis कि जानबूझ के किया हुआ है representation. ठीक है. This is fine. We can see one example बाद में. Yeah, what is bankruptcy? Party dissolve हो गई है, insolvent हो गई है, general arrangements will be made. Yeah, winding up resolution, appointment of liquidator, enforcement of security, analogous events and actions in furtherance. So what are the different processes associated with bankruptcy? Write that question. What are the different processes associated with bankruptcy? हेलो सर. हाँ, yes. यस बैंक का भी जो कॉर्पोरेट एक्शन लिया गया है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, वो एक्चुअली क्या था, मतलब कौन सी प्रोसेस थी वो? Can you share that article? क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है अभी. ठीक है सर. ओके. मतलब अभी का बोल रहे हो या पहले का बोल रहे हो? अभी का 1-2 दिन पहले जो न्यूज आई थी, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया ना, मतलब. नहीं, तो I haven't come across that news. Need to check it कि कौन सा कैसे डेट रिस्ट्रक्चर किया है. कॉर्पोरेट एक्शन ही होगा, लेकिन वो किस रिलेटेड मतलब रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं या क्या रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल से. मतलब आपने जो बोला था ना कि वो बैलेंस शीट क्लियर करेंगे दूसरे कंपनी के नाम पे, मतलब एक दूसरी कंपनी बना के उसके नाम पे पूरा ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट क्लियर करेंगे, तो शायद वो ऐसा कुछ था. ओके. ओके. ठीक है. जस्ट पोस्ट दैट आर्टिकल, आई विल गो थ्रू इट एंड लेट यू नो. ठीक है सर. ओके. So basically, of course, bankruptcy is related to dissolution of the party. पैसा खत्म हो जाएगा तो इंसॉल्वेंट,
General agreements will be made and binding up resolution. Of course, there will be an appointment of a liquidator. ऐसे ही directly bankruptcy execute नहीं होती है. There has to be a legal entity who will be taking care of this entire bankruptcy process, and that is known as a liquidator. Okay, तो अगर क्वेश्चन आ सकता है who is a liquidator, ठीक है, who is a liquidator. Now, next is what is a confirmation of the trade. So it is more of a like a part of a single agreement, and the key constituents will be all the economic terms of the given transactions are met. Payment is being done. There is no further obligation. Timing and method of the payments are clearly mentioned in that agreement, and as per the regulations or instructions, the method of the payment, say for example, in terms of dollars on so and so date are executed and provided. Account details भी provide की जाएगी जहाँ से funding आ रहा है from one party to another. Only then a confirmation will be sent. Now, confirmation can take place either through email or upgrading your master agreement and informing your client कि आपका data execute हो गया है, आपका information execute हो गया है. Both the parties will settle their amount. That's it. और कुछ होता नहीं है वहाँ पे. So that is the exchange or the execution of the confirmation. हाँ, see, exchange of telex is fax and electronic messages or emails. ज़्यादातर email होगा. And second will be your updating of your master agreement. Now, confirmation may be made up of introduction, standard paragraphs, and closing paragraph. Sample product specific provisions अगर कुछ है तो transaction specific modification. Just have a look at this example. For example, see, this is a party, big company, location, contact number, letter head है XYZ बैंक का और ये particular date है. One thing. Attention जो भी मतलब जिसको कांटेक्ट करें. क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन, रेफरेंस नंबर दिया है along with the reference date. The purpose of this letter is to confirm the terms and conditions of the swap transaction entered into between us on the trade date. मतलब big कंपनी और XYZ बैंक के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है. कौन सा? करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप. One thing. The definitions and the provisions contained in this ISDA definitions as published by the International Swap Derivatives Agreement are incorporated into this confirmation. And the event of any inconsistency between these definitions and provisions, this confirmation will govern. The confirmation constitutes of a confirmation, मतलब जो भी supplement में दिया होगा, तो these are all the legal perspectives will be mentioned. This is so and so regulations are being followed. We are agreeing upon what all terms and conditions we have discussed. On the day of transactions, I am going to enter into this agreement with so and so amount in a given currency. तो अगर वो बैंक वाला agree करता है, तो he will be sending another letter or response letter जहाँ पे they will be confirming the transactions. Now see, this is the confirmation note you can say or a contract note you can say. Trade date था 26 सितंबर, effective date था 30 सितंबर 2011. खत्म कब हो रहा है? 5 साल के बाद 30 सितंबर 2016. फिक्स रेट पेयर कौन है? पार्टी है. इंटरेस्ट रेट स्वैप है ना. कितना अमाउंट है? This much amount of pounds. Now any other instructions if they want to mention 30th September and 30th March in each year commencing on 30th March ending on this subject to adjustment in accordance with the following business day convention. तो डे काउंट कन्वेंशन के हिसाब से इन लोगों ने कोई तो इंस्ट्रक्शन दे रखा है. फिक्स रेट कितना है? 4.5% पर एनम. एक्चुअल बाय एक्चुअल हैज बीन मेंशन्ड ऑलरेडी. वन थिंग. दूसरा काउंटिंग फ्लोटिंग वाला कौन सा है? पार्टी बी. एंड उनका करंट अमाउंट इतना है. ठीक है. अगेन उनका कोई कंडीशंस मेंशन्ड होगा. 30th September एंड 30th March. These are more of like a semi-annual basis लग रहा है मुझे. ठीक है. Commencing on पहला साल होगा मतलब स्टार्ट होगा 30th March से, तब जाके आपको सेमी एनुअल बेसिस के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करना है. क्लियर है? 30th March से 6 महीना कितना हुआ? 30th September और 30th September से वापस हुआ 30th March, that is 6 months. So semi annual rate of interest is being included. डायरेक्टली नहीं बोला है. तो ऐसे नोट में आपको फिर आइडेंटिफाई करना होता है. वन थिंग. सेकंड, फ्लोटिंग रेट में कौन सा होगा? यूरो आइबोर. वो लाइबोर माइबोर की तरह है. तो यूरो का जो चल रहा है बेंचमार्क रेट वो काउंट किया गया. 6 months इज द डेजिग्नेटेड मैच्योरिटी. स्प्रेड इज -2%. नॉट ओनली लिबोर +2 का था ना, लिबोर +2 या माइबोर +2, यहाँ पे है यूरोबियर -2. ठीक है, फ्लोटिंग में. वन थिंग अगेन, एक्चुअल बाय एक्चुअल एंड फर्स्ट डे ऑफ ईच कैलकुलेशन पीरियड विल बी द रीसेट डेट. ठीक है. जब एक साल खत्म हो जाए या 6 महीने खत्म हो जाए, दे विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट कि चेंज करना है कि नहीं करना है.
सो दिस हाँ तो मतलब उनको फ्लोटिंग ऐसे रखना है। लिबोर +2 ऐसा हमने एग्जांपल देखा था, तो 10 अगर चल रहा है तो 10 + 2 इज 12% एप्लीकेबल, 10 - 2 तो 8% पर एनम या पर जो 6 मंथ्स है उस हिसाब से एप्लीकेबल रखा हुआ है। वो कुछ भी पार्टी रख सकती है, वो अपने हाथ में नहीं होगा। यस दे नीड टू एग्री, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा, अदरवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट नोट तब तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सचेंज के लिए मेंशन किया गया है। इनिशियल एक्सचेंज रेट कब होगा? 30 सितंबर 2011, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रीसीडिंग बिजनेस। ठीक है, तो ये उनका अमाउंट था। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो इनको चेंज करना है वो कर सकते हैं। यस, अकाउंट कौन सा है? पार्टी ए का है, दिस इज द अकाउंट नंबर एट बार्क्लेज बैंक, और पार्टी बी का ये अकाउंट नंबर है लॉयड्स बैंक। तो जो भी नेट इफेक्ट आएगा इंटरेस्ट पेमेंट्स का, उस हिसाब से एक दूसरे में डिपॉजिट कर। क्लियर? I don't think there is any other details mentioned over here. हाँ, offices for party A for the swap transaction is London, दोनों का लंदन है, तो jurisdiction will be your London. ठीक है, that is what is mentioned over here. Okay, so this confirmation will be governed and construed in accordance with the English law. English law मतलब जहाँ उनके जो भी laws वगैरह है या legal regulations. Please confirm that the foregoing correctly sets forth the terms of our agreement by executing the copy of this confirmation and returning it to us by sending us to a letter substantially similar to this letter which sets for the materials terms of the swap. तो अभी दूसरी जो काउंटर पार्टी है उनको भी यही लेटर एक दूसरा उनको भेजना है, along with that लेटर हेड पे लिखा हुआ स्टैम्प, सिग्नेचर, ऑथोराइज सिग्नेटरी जो भी है वो सब करके भेजना है वापस, तब जाके ये कंफर्म होगा। ठीक है, so this is how the agreements will be done between two parties. समझ में आया पूरा? या any doubt in this? Now there could be additional details also. कौन कौन से एलिमेंट की डिटेल्स आ सकते हैं as of now we don't know, but आपको वो एक चीज का ध्यान रखना है, if multiple settlements are there, यहाँ पे तो एक ट्रांजेक्शन दिखाया है, now there could be 10 different transaction taking place, तो हर एक का वो अमाउंट चेक करना, कौन से बैंक है, यहाँ पे दो ही बैंक अकाउंट्स हैं, it could be multiple bank accounts also. ठीक है, बॉन्ड के लिए अलग है, स्वैप के लिए अलग है, स्टॉक्स एंड ऑप्शंस के लिए अलग है। ठीक है, अलग अलग इफेक्ट आ सकती है उस हिसाब से, उसके बाद उन सब का रिकंसिलिएशन करना है आपको। गेटिंग द पॉइंट नाउ? क्लियर? फिर तो बस ऐसे ही वो लीगली लिखा हुआ है, दिस कंफर्मेशन एविडेंसेस अ कंप्लीट एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड अस एज टू द टर्म्स ऑफ द स्वैप ट्रांजैक्शन टू व्हिच दिस कंफर्मेशन रिलेट्स। दिस यू कैन जस्ट गो थ्रू, मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, yes, one of the important thing will be the reference numbers will be mentioned for every transaction identity. अगर एक स्वैप ट्रांजैक्शन किया, एक रेफरेंस नंबर वो आएगा यूनिक आइडेंटिफायर के हिसाब से, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 10 ट्रांजैक्शंस है, 10 अलग अलग रेफरेंस नंबर्स विल बी देयर, यू नीड टू क्रॉस चेक एवरीवन। ये चेक करना है अगर इंडिया में बैठे हो और यूके के ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, कंट्री कोड, प्रोडक्ट कोड, उसके बाद जो भी उसके 5-6 नंबर्स रहते हैं वगैरह वगैरह उस टाइप का, बट दैट विल बी मेंशन्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, along with the date of transaction. If anything goes wrong, transaction has to be halted under any circumstances. Please connect your supervisors in that case. उनको पूछना पड़ेगा लिटरली कि भाई यहाँ पे इस तरह का मेंशन नहीं है टर्म्स कंडीशंस में, फिर भी ये हुआ है तो अब क्या करना है। ठीक है, तब जाके वो रेजोल्यूशंस देंगे, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, शायद एंटिटी से बात भी करना पड़ सकता है उस केस में। ठीक है, क्लियर सो फार? ISDA मास्टर एग्रीमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, लेकिन कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए। Which और एलिमेंट्स विल बी देयर, what could be the different ways or different processes through which these transactions can be terminated, halted, etc. etc. ठीक है, clear? Any doubts in this so far? एक बार गो थ्रू करना आज घर पे जाके पूरा ISDA एग्रीमेंट्स, तो थोड़ा एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा। So I think we are done with this then. लेवल 2 में मोस्टली आई थिंक ओनली 2 थिंग्स आर लेफ्ट नाउ। एसेट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, 1 म्यूचुअल फंड्स वी हैव डन, हेज फंड ऑपरेशंस वी हैव डन, नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट नेट एसेट वैल्यू वो पता होना चाहिए, वो इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, एक आध 2 इंटरव्यू में शायद आया था क्वेश्चंस, हाउ नेट एसेट वैल्यू इज कैलकुलेटेड। ठीक है, पहले डेफिनेशन, फिर कैसे कैलकुलेट होता है, देन गिव एग्जांपल्स। डोंट फॉरगेट टू फॉलो द स्ट्रक्चर कहीं पे भी। ठीक है, trade life cycle, another important chapter. What is trade life cycle? What are the components of trade cycle? How it is carried out?
ये सब क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द ऑब्जेक्टिव इन माइंड, फ्रंट ऑफिस में कैसे होगा, मिडल ऑफिस में कैसे होगा, बैक ऑफिस में कैसे होगा. Trade execution and capture, we have seen different ways of how trades are executed and captured. Okay, trade enrichment steps and final selection of the custodian, trade validation we have seen. STP is an important method to be understood over there. ठीक है, ये जो straight through processing वाला है, this is important. Okay, what are the important components of trade validation? Another important topic. Trade agreement we have seen. What are the elements of trade agreement? How this is carried out? How settlement is carried out? Outgoing trade confirmation कैसे चेक करना है, तो we have seen different entities over there, right? Transaction report कैसे करते हैं, we have already seen certain methods. Settlement instructions we have seen. Reference data management, another important topic. What is reference data management? What all elements are there? वो कुछ थे ना 9 या 10 elements हर एक के we have written, ठीक है, वो आपको चेक करना है. फिर आते हैं काउंटर पार्टी आइडेंटिफायर्स, यूनिक आइडेंटिफायर्स, ऑफ कोर्स फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड थ्रू दिस ओम जियो स्विफ्ट एंड मार्केट. कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन मल्टीपल वेज, राइट. प्राइसिंग आज देख लिया, प्राइसिंग ऑफ द डेरिवेटिव्स एंड अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ISDA master agreement, events of the default and other things. Corporate actions, yes, most important topic from level 1 and level 2 perspective. ठीक है, बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू, डिविडेंड्स, एवरीथिंग विल बी कमिंग ओवर हियर. इवन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट ये वगैरह ये आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. मैंडेटरी एंड वॉलंटरी कॉर्पोरेट एक्शंस. स्टॉक स्प्लिट, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें था स्पिन ऑफ, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज स्पिन ऑफ, ठीक है, वो आपको याद रखना है. वॉलंटरी एक्शंस आर देयर. ओके, कोलैटरल इज नाउ रिमेनिंग फॉर यू. वो एक टॉपिक पेंडिंग है, टाइप कोलैटरल एंड टाइप्स ऑफ कोलैटरल एंड लेटर रिकंसिलिएशन. ठीक है, बस 2 चीज बाकी है. सो टुमारो either I think I will be taking either reconciliation या तो collateral, और उसके बाद आपका soft skills थर्सडे को, फ्राइडे को जो भी पेंडिंग है वो खत्म हो जाएगा. That's it for level 2. लेवल 3 में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस. रेगुलेटरी तो ऑलरेडी बहुत कुछ देख रखा है. रिस्क मैनेजमेंट में हेजिंग स्ट्रेटेजीज वी विल सी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से. बस दैट्स इट. तो एक हफ्ते में शायद वो भी हो जाना चाहिए. तो प्रोबेबली बाय 3rd week you will be completing your सिबॉक. बट मॉक्स हर एक को अपेयर करना है, वो मत भूलना. प्रिपरेशंस धीरे धीरे स्टार्ट कर देना. लेवल 2 के फ्यू क्वेश्चंस आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन टुडे, और इस हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम लेवल 2. ठीक है, टेक्निकल नहीं पता लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं ऐसा. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है क्योंकि है नहीं इतनी सारी. बट फ्यू यू कैन बी राइट. व्हाट इज, इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज कोलैटरल, तो उसका पता होना चाहिए. व्हाट इज रिकंसिलिएशन, तो वो पता होना चाहिए. हाउ वी आर डूइंग रिकंसिलिएशन, उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए. ठीक है, प्रोबेबली नॉट सेक्शंस, क्योंकि ये सब चेंज होता रहता है. रेगुलेशंस कीप ऑन चेंजिंग, न्यू सेक्शंस ऐड करते रहते हैं ये लोग, तो वो डिपेंड करेगा. लेकिन हाँ, एक आध 2 सेक्शंस के यू कैन जस्ट गो थ्रू इंपॉर्टेंट वंस. कोई भी ऐसा है तो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट. व्हाई? बिकॉज इंटरव्यू में थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दोगे तो वो दिक्कत है. थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे यू विल कम टू नो. ठीक है, ओके. एनीथिंग पेंडिंग सो फार? असाइनमेंट में वो एक केस स्टडी अगर किसी को मिलता है, आई हैव गिवन 1 असाइनमेंट टुडे, तो वो एक चेक करके लाना, थोड़ा डिटेल्ड वन. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट सो फार नाउ? नो सर. No, sir. पल्लव, कोई डाउट्स है? नो सर. ओके. राज? Yes, sir. No, sir. Any doubts? No. Okay. ठीक है, डन. चलो, we are closing the session then. Thank you and keep revising level 2 जितना भी हो सके उतना. TLC, what is trade life cycle management, how it different processes आपको देखना है. I think एक वीडियो होना चाहिए कहीं पे, तो YouTube में मिल जाएगा. अगर नहीं है तो you can just go through basic definitions. बहुत डीप में नहीं जाना है, बट आपको पता होना चाहिए एंड टू एंड प्रोसेस कहाँ पे कैसे वर्क होता है ट्रेड लाइफ साइकिल में. स्टार्ट कहाँ से होता है, बीच में क्या होता है और एंड में क्या होता है. बस दैट्स इट.
Okay. Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.